नाम क्या है? This call is now being recorded. What is Gupta the is another ruler. Yes, very good. Remember the lesson's name, okay? In the last class, we read Emperor Harshvardhan, right? Yes or no? Yes. और भी कंप्लीटेड हर्षवर्धन, एम्परर हर्षवर्धन कंप्लीट किया था कि वहां पे पहुंचे थे? नहीं मैं रीड तो नहीं किया था. We have not completed, no? No. Okay. Chalo, read Zohair, then I'll explain. Emperor Harshvardhan. After Gupta age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important states of ancient India. It belonged to Pushyabhatu, Bhati, Pushyabhati Bhati, clan. clan of Thaneshwar, Rajayavardhan and Rajyavardhan. Harsh Rajyavardhan and Harshvardhan were sons of Prabhakar Vardhan, while his daughter was Rajesh, Rajayashri Rajeshri, Rajashri, who was married to King of Kanuj, Kannauj, Kanuj, Kanuj Dhruv, Varman, Varman, God King Shashank, Shashanak, Shashanak and Shashank, King Sasan, Sasan and King of Malwa Malwa, Malwa kidnapped नहीं, Malwa, Malwa kidnapped Rajashri and attacked on the kingdom, which created a major crisis. crisis. Rajvardhan crisis. Rajvardhan died while trying to save Rajashri. Zohair, Rajyavardhan and Rajyashri. Okay? मैं माले से मैं कितना जूना जमाना ना नाम से. हाँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है. आपकी यूपीएससी एग्जाम्स तक के साथ रहेंगे. चलो, In राज्यवर्धन. such an in such in such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD. He saved Rajshri. Not only this, he started his proper rule in both the states. States. Kanuaj, Kanuj and Thaneshwar. Kanu, Kanuj and Thaneshwar. Hmm. Harshvardhan was last great emperor of ancient India. He spread his empire in Magadha, Odisha, Saurashtra, Saraswat. God, Saraswat. सौराष्ट्र नहीं, सारस्वत. Mi- Saraswat, God and Mithila. God, Mithila. In contemporary status, Status. Maitarak States, okay? states, Maitarak King Dhruvasan was his son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the south. In the Battle of Narmada between Harshvardhan and Pulkeshi, Harshvardhan was defeated.
Harshandan was regarded as the powerful king in north of Narmada. Yes, very good, Zohair. Thank you, beta. Now mute your mic. See, now I'll explain you in a very easy way. Like about हर्षवर्धन, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो थे वो प्रभाकर वर्धन के बेटे थे. किन के बेटे थे बेटा? प्रभाकर वर्धन. ओके. Prabhakar Vardhan. प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी थी. ओके. ही हैड टू सन. वन इज राज्यवर्धन and the other is हर्षवर्धन and the daughter's name is राजेश्री. Okay. क्या है डॉटर का नाम? राजेश्री. Rajesh. Yes, yes, Fazil, Rajeshri. Now, beta, what Zaki, Zohair, Fazil, and all those who are present, Ali Asgar, Yes, ma'am. Rajeshri, and Rajyavardhan and Harshvardhan, they were children of Prabhakar Vardhan. Okay. Now, after previously क्या होता था कि राजा के बेटे के बाद राजा के डेथ के बाद उनके बड़े बेटे राजगादी पे आते हैं. राइट. इनहेरिटेंस में हमने देखा था. इनहेरिटेंस. Yes. Or usually the eldest son will become the next king. This we saw, right? So after Prabhakar Vardhan, Rajyavardhan came on the throne. Rajyavardhan जो थे प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे. Okay. Now after the death of राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की डेथ कैसे हुई पहले तो हम वो समझें. ओके. जैसे राज्यवर्धन की और हर्षवर्धन की जो सिस्टर है दैट इज राजेश्री. कौन है उनकी सिस्टर? Rajesh. हाँ, राजेश्री किन दोनों की सिस्टर है? Whose sister is Rajesh? Harshvardhan and Yes, राज्यवर्धन. ओके. Rajavardhan. हाँ, और वो किसके बेटे हैं? Whose son they are? Rajesh. हाँ. Prabhakar Vardhan. Yes, absolutely right. प्रभाकर वर्धन के. राइट. So now their sister. अच्छा, क्या नाम था? मैं भूल गई उनका. सिस्टर का नाम क्या था? Rajeshri. हाँ, तो राजेश्री जो थे उनकी शादी हुई थी ध्रुव वर्मन से. ओके. और वो कनौज के राजा थे. कहाँ के राजा थे? कनौज के. कनौज एक स्टेट है नॉर्थ इंडिया में. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस दैट तब वहां के उनके जो राइवल्स होते हैं जैसे गॉड किंग शशांक है ना और मालवा के किंग, उन दोनों ने मिलके क्या किया? राजेश्री को किडनैप कर लिया. क्या किया? राजेश्री को किडनैप कर लिया. तो और किडनैप करके क्या किया कि कनौज जो स्टेट था जिनके वो राजा थे ध्रुव वर्मन, उनको उनके स्टेट पे अटैक किया है ना. तो उनके स्टेट पे अटैक किया तो क्या हुआ कि मेजर क्राइसिस इरेक्ट हुए. तो राज्यवर्धन ने सामने अटैक किया. तो राज्यवर्धन तब राजा थे है ना. तो राज्यवर्धन जो राजेश्री के ब्रदर भी थे और किंग भी थे. राइट. तो जब उन्होंने सामने अटैक में फाइट किया तो he was killed. He died while trying to save his sister Rajeshri. Rajyavardhan died. Right. So in that condition what happened कि उनके दूसरे भाई थे वो उनका नाम क्या था बेटा? Harshvardhan. हाँ. तो अब क्या हुआ कि इन एन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हुआ कि हर्षवर्धन को राज्यवर्धन उनके बड़े भाई मर गए, डाई हो गए. राइट. सो इन एन इमरजेंसी कंडीशन हर्षवर्धन हैड टू कम ऑन द थ्रोन. राइट. और उन्होंने दोनों कनौज भी संभाला और थानेश्वर भी संभाला क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो थे वो थानेश्वर के किंग थे जहाँ पे राज्यवर्धन असेंड हुए थे. तो अब राज्यवर्धन की डेथ के बाद कौन आएगा थ्रोन पे? हर्षवर्धन. तो हर्षवर्धन ने कनौज को भी संभाला और थानेश्वर को भी संभाला. अंडरस्टूड? Oh, yes, ma'am. Understood. Who was Prabhakar Vardhan? Now say miss. Chalo, you give me answers. Okay, ma'am. Ma'am, Prabhakar Vardhan is the See. father of Harshvardhan and Rajyavardhan. And Rajyasri is the sister of Harshvardhan and Rajyavardhan. Yes, very good. देखो
बेटा ये this questions are your general knowledge questions. You should be knowing this about Indian history. Okay, this part of your social will be of medieval Gujarat, जो आप 7th में पढ़ोगे उसका बेस है ये. अंडरस्टूड. 7th का फर्स्ट लेसन ही आपका 2 बिग स्टेट्स होगा, जो पहला हर्षवर्धन का है और दूसरा जो है वो पुलकेशी 2 का है. किसका है? पुलकेशी 2 का. पहला स्टेट हर्षवर्धन का आएगा, जो कनौज और नॉर्थ इंडिया में रहेगा, और साउथ इंडिया में पुलकेशी 2 रूल करते थे तभी. समझ में आया? Did you understand? So who kidnapped Rajeshri? Yes, ma'am. Dhruvardan. नहीं, ध्रुव वर्मन तो उनके हस्बैंड थे बेटा. Who kidnapped Rajeshri? Okay, no problem. See, whatever I explained, that is written over here. Zaki, read this one so you will understand and everyone will understand. Malwa, king of Malwa. नहीं, King God King Shashank or Shashank and king of Malwa kidnapped. yes, they kidnapped Rajeshri. And who died while trying to save Rajeshri? Yeah. Rajyavardhan. मैं मावड़ी क्यों? हाँ, राज्यवर्धन ने थ्रोन पे आके सबसे पहले क्या किया पता है? अपनी बहन को किंग और शशांक से आजाद करवाने के लिए लड़ाई की. सबसे पहले यही किया, पर उसी लड़ाई में वो शहीद भी हो गए, है ना? तो उस पता है. हाँ, सॉरी, अंडरस्टूड और नॉट? चलो Zaki, Understood. read this once. I'll ask you people again questions, huh? So pay attention. Yes. मैम ये नहीं. Huh? मैम ये ही. हाँ, this revise it. That ये what ही I read करो. yes. Okay. After Gupta age, the kingdom of Harshavardhan is considered as one of the important states of ancient India. He belonged to Pushyabhuti clan of Thaneshwar. Rajyavardhan and Harshvardhan were sons of Prabhakar Vardhan, while his daughter was Rajeshwari, who married to king of Kanuj, Dhruvarman. God King Shashank and king of Malwa kidnapped Rajeshwari and attacked on the kingdom, which created a major crisis. Rajyavardhan died by trying to save Rajeshwari. In such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD. He saved Rajeshwari. Not only this, he started his proper rule in both the states, Kanuj and Thaneshwar. Harshavardhan was last great emperor of ancient India. He spread his empire in Magadha, Odisha, Saraswat, Gaud, Mithila in contemporary states. Maitra king Drusen was his son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the south. In the battle of Narmada between Harshvardhan and Pulkeshi, Harshvardhan was defeated. Harshvardhan was regarded as a powerful king in north of Narmada. Till here, everyone. Yes, ma'am. Understood. Understand now? Yes. So, in such an emergency situation, what happened is the हाँ बेटा बोलो. समझा ना? Okay, very good. चला. So, in such a situation, what happened बेटा? Emperor Harshvardhan ascended the throne in 606 AD and he saved Rajeshri. Not देखो ये हर्षवर्धन जकी देख रहे हो ना आपके उसमें, है ना? और ये दूसरा कौन सा है जो है, देखो तो जरा, एम्परर हर्षा के बारे में, पुलकेशी 2 है ना,
है कि नहीं? यस और नो? Yes. अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, रुक जाओ। अच्छा वो डाउनलोड नहीं होगी, डिलीट हो चुका होगा मेरे फोन में से, नहीं तो मैं दिखाती आपको। सेमेस्टर 1 की बुक डिलीट हो चुकी है, वरना मैं आपको दिखाती। सेमेस्टर 2 की ही है इसमें। नो प्रॉब्लम, चलो सेमेस्टर 1 की नहीं है, फिर कभी दिखाऊंगी। ओके, आई शो यू सम अदर डे। वेट, No. I don't know how to turn on the camera. I have one book from that I can show you. First, you Wait in one front, in minute. upside, that is button of switch camera. See, tap it and now on the video. One minute. Let me go to Google first. Ma'am, you can switch. Where? What to do now? Ma'am, you can go in camera. 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 Okay, Ma'am, camera event now. first stop presenting. Now, camera. आ गया हो गया मैम कैमरा तो आ गया, पर वो नीचे की साइड करने के लिए क्या करना है? मैम तो मैं ऊपर देखो ऊपर स्विच बटन है कैमरा आएगा ब्लूटूथ ऊपर के से नहीं बाजू हो रहा है। आई एम ट्राइंग फ्रॉम देयर ओनली। फोन के बाजू में है ना वो मैम एक काम आई एम करती है, फोटो खींच के दिखा देती हूँ। चल मैम आप देखो मैम अदर वे मैम स्क्रीन फोटो खींच शेयर लेती हूँ, करो चल। और आप नहीं, आई हैव क्लिक्ड द फोटो एंड आई विल शो यू। वेट 1 minute. That's a better option. Zaki, you stop sharing. I am doing better. देखो, Zaki, can you see my screen now? yes ma'am to big style Can you see my screen? yes तो फर्स्ट में कौन है? देखो, हर्षवर्धन के बारे में देखो, है ना? Can you see this? Means this is your basic. India was ruled by Gupta dynasty from approximately 320 to 650 AD, right? The Gupta dynasty was spread in the most of the subcontinent. Means what, beta? Okay, this is what we are going to learn throughout, है ना? 7th standard also, because all this is about the medieval Gujarat. Understood? yes ma'am Understood what I mean to say? yes ma'am yes So learn this in this manner कि आपको वो याद ही रह जाए। hello ma'am हाँ बेटा, read बोलो। can I read Sorry? Yes, you can read. हाँ, yes ma'am cultural contribution. Cultural contribution of Emperor Harshavardhan is very important. Great Chinese traveler Hian Tsang came to India during his time. He stayed in his palace. Harsh was devotee of Shiva and later became a great follower of Buddhism. He organized a religious conference under the presidency of Hian Tsang. He placed the idol of Buddha on mantle of an elephant and worshipped
A seminar was organized on Mahayana and Himyan. Emperor Harsh had passion for literature, art, and Literature. education. Literature, art, and education. Great poet Banbhat was Add on. associated with his poetry. He had written great volumes like Harsh Charitam and Harish Charitra. Charitam and Kadambari in Sanskrit. Mayur Bhatt and Jayasuriya were also great poets of the time of Harsha. Emperor Harsh himself also was a high-ranking literary figure. He composed two plays called Priyadarshika and Ratnavari. Along with it, he also wrote a special play based on Jatak stories of Buddha named Naganan. Harsh also formed friendly relations with other countries. He sent a delegation to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. In his way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator, and literature. He donated 100 villages to sustain Nalanda Vidyapith. Yes, absolutely right, Zaki. Very good. Chalo, mute your mic. Now I'll explain you. From cultural contribution, okay, cultural contribution, the earlier of Harshvardhan was very important. Ma'am, your What voice was is very important too much. earlier? Ma'am, your Alias voice girl? is too much breaking. Yes, ma'am. No, beta, I'm in full network. I'm sitting here. What was the contribution? Cultural competition of Harshvardhan was very important. Okay, understood? Now, beta, at that time, okay, one Chinese traveler, and his name is Hung Stang. What is his name? His name is Hung Stang. He was a great Chinese traveler. He came to India during Harshvardhan's time. हर्षवर्धन की जब रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे वो आए थे इंडिया में एंड ही व्हाट ही डिड ही स्टेड इन हिज पैलेस स्टेइंग वहां पे रुके थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसे और वो एक पिलिग्रिम थे हुसैन क्या था पिलिग्रिम थे मतलब वो धर्म यात्रा पे निकले थे है ना और वो पिलिग्रिमेज से एसोसिएटेड विथ बुद्धा पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे है ना तो हर्ष वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव हर्षवर्धन जो थे वो शिव भगवान के डिवोटी थे बट लेटर हिंगस्टिंग के साथ रह के और ये सब समझ के ही बिकेम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म है ना बुद्ध भगवान को भी मानने लगे and he organized a religious conference under the presidency of Hingstein और उन्होंने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी रखी और इतना ही नहीं बेटा ही स्टेड हियर फॉर 15 years जहां तक मुझे याद है तो हिंगस्टिंग जो थे वो 15 years तक रुके थे और भले वो चाइना से आए थे बट ही वाज अ चाइनीज पिलिग्रिम बट इन ऑर्डर टू विजिट द प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज एसोसिएटेड टू बुद्धा वो आए थे है ना बट ही और एंड व्हाट ही डिड he placed और जैसे बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे राइट सो he placed an idol of Buddha where did he place on a mantle of elephant and worshipped है ना and a seminar was regularly arranged and organized in Mahayan and Hinayan okay then everything is about the literature love of Harshvardhan he was a passionate to literature art and education उनको लिटरेचर वर्क बहुत पेशेंट था ही हैड लव टू डू आर्ट एंड एजुकेशन सो नॉट ओनली दैट द बनभट्टा वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन कोर्ट और उन्होंने बनभट्टा ने
दो संस्कृत वॉल्यूम्स लिखे थे, ग्रेट संस्कृत वॉल्यूम्स। एक था हर्षचरित्र एंड दूसरा था कदम्बरी, और ये दोनों ही संस्कृत लैंग्वेज में लिखे थे। ओके, अब हर्षवर्धन खुद भी लिटरेरी फिगर थे, उनको भी लिटरेचर लिखना अच्छा लगता था, तो उन्होंने भी दो प्लेस कंपोज किए थे। पहले का नाम है प्रियदर्शिका and the second is Ratnavali. Okay, what is it? Priyadashika and Ratnavali. So here you don't have to get confusion. Okay, okay. So special play, and along with it, he also wrote Shatak stories of Buddha named Naganand. Okay, okay. So now don't get confused over here. Who will say me? बन भट्टा ने कौन से दो great volumes लिखे थे? बन भट्टा ने कौन से दो ग्रेट वॉल्यूम्स लिखे थे? Yes, ma'am. Which great volumes were written by Banna Bhatta? Ma'am, Harshcharitam and Kadambari. Okay, and by Emperor Harshvardhan? Emperor Harshvardhan wrote which two plays? and Ratnavali. Very good. Chalo, now I will not show you my screen and I'll ask you. आप लोग read कर रहे हो ना, तो चलो, now answer me. Who was Rajyashri? Rajyasri was sister of Rajyavardhan and Harshvardhan and daughter of Prabhakar Vardhan. Okay. Now on the next one, you say me. Who was Prabhakar Vardhan? Prabhakar Vardhan was a king of Very good. the state, Pateshwar. हाँ. Okay, very good. Chalo, now who will say me? Who was okay, which plays were written by Ban Bhatta? बन भट्टा ने कौन से प्लेस लिखे थे? बन भट्टा ने कौन से चलो याद करो, याद करो. संस्कृत हाँ, कौन से लिखे थे? संस्कृत लैंग्वेज, यस, बट कौन से? Fazil wants to answer. Harshcharitra and what is the other's name? Yes, Harshcharitam and Kadambari. And Kadambari. And हर्षवर्धन ने कौन से लिखे थे? Priyadarshika and Ratnavali. Ratnavali. Understood till here, everyone? Yes, ma'am. Now, Harsha also formed friendly relations with other countries. He sent a delegate to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. In this way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator, and a literaturer. He donated 100 villages to sustain Nalanda Vidyapit, Nalanda University को सस्टेन करने के लिए, उनका काम चलाने के लिए 100 विलेजेस उन्होंने डोनेट किए थे हर्षवर्धन ने. ओके, सो दिस वे हर्षवर्धन वाज अ ग्रेट रूलर एंड हु केम ऑन द थ्रोन इन 606. ओके, और प्रेजेंटली जो थानेश्वर है ना बेटा, प्रेजेंटली अभी थानेश्वर प्रेजेंटली पंजाब एंड हरियाणा में है. कहाँ पे है? पंजाब एंड हरियाणा. हाँ, पंजाब एंड हरियाणा में है. अब हम देखेंगे पुलकेशी टू के बारे में. अब जब हर्षवर्धन जिस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, उसी पीरियड में पुलकेशी टू साउथ इंडिया में कहाँ पे रूल कर रहे थे? साउथ इंडिया में, है ना, इन साउथ इंडिया. सो ही वाज आल्सो अ contemporary ruler. He was also a great ruler. He was also a brave ruler.
same way he was also very fond of art. और पुलकेशी टू के टाइम पे वातापी केव्स ऑफ वातापी धारापुरी बनाए गए थे, है ना, जैसे हर्षवर्धन के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी, समझे। और Yes, yes. पुलकेशी टू जो थे वो हिंदू रिलीजन को फॉलोवर कर रहे थे, है ना। उनके टाइम में बहुत कम, वेरी फ्यू पीपल फॉलोड बुद्धिज्म इन हिज टाइम, ओके। एंड पुलकेशी टू के टाइम पे दैट वाज द टाइम व्हेन जैनिज्म कॉल्ड दिगंबर इंक्रीज्ड, दिगंबर सेक्ट के पीपल ज्यादा इंक्रीज हुए जैनिज्म फॉलो करने वाले, अंडरस्टूड। बट वी कैन से है पुलकेशी टू के टाइम पे, उनके टाइम पे जैनिज्म ज्यादा हाँ, हुआ it was ऐसे. more propagated more, yes. And followers of Jainism, जैसे Buddhism was in Harshvardhan's North India, right? So but both Harshvardhan and Pulkeshi too were contemporary rulers, okay. They were great rulers. And हर्षवर्धन few उन दोनों के बीच में मुझे हिस्ट्री का याद है कि आफ्टर फाइटिंग a few battles, हर्षवर्धन had a feeling of satisfaction, वो satisfied हो गए थे, so he stopped indulging into more wars, है ना। बट पुलकेशी टू was very ambitious, पुलकेशी टू जो थे वो बहुत ambitious थे। He kept on expanding his kingdom by conquering different regions and more wars and mute your mics, I'll speak only after that. I said mute your mics. Yes, thank you. So Pulkeshi too, kept on fighting all his life. Understood? And King Harshvardhan died after 5 years. And and Harshvardhan भी उनके बाद पुलकेशी टू का डेथ हुआ था 647 में, after the death of Harshvardhan. Okay? Yes. Alias, read this Pulkeshi two paragraph. Hello, can you listen me, boys? Yes, ma'am. Ma'am, can I read Asari Ahmad Fazil? Yes, Fazil, read Muhammad better. Akif, yes. Among the contemporary kings. Pulkeshi too. Among the ma'am, what is this? Contemporary. Contemporary king of Emperor Harsh. Time Pulkeshi too was the most powerful. Cholakyan king. Cholakya king, he took the power from Rashtrakutas. Rashtraka in Maharashtra. Maharashtra and Established. he state Pulkeshi to rule of almost 40 years. He even defect emperor. He was a great winner after defeating Kadam. Ganges and Of Maheshwar. of Maheshwar Mauryas of Konkan. He received the title of Lord of the South. the tide of lords of the south. He also defect Lat Malwas and Gurjas. Malwas and Gurjas. He was the ruler of all region of uh, Karnataka. Karnataka, Maheshwar and And Konkan. Konkan. Yes, very good. Chalo. Now about Pulkeshi too, as I said you, a lot of information I gave you about